तो जो सर्किट कंपोनेंट्स हैं, इफ वी टॉक अबाउट कंपोनेंट्स, कौन कौन कंपोनेंट्स इसमें यूज हुए हैं, तो सबसे पहले क्या है, ट्रांजिस्टर। और ये ट्रांजिस्टर का जो बीटा है, कॉमन इमीटर करंट गेन इज 100, है ना, बीटा इज 100। और इसका आउटपुट रेजिस्टेंस है RO, आउटपुट रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट ओम। और इसके ऊपर जो पावर सप्लाई दिया जा रहा है वो VCC इज +20 वोल्ट। सो दिस VCC इज +20 वोल्ट। ये इसके अलावा जो सिग्नल है, ये VS सिग्नल एंड द सोर्स रेजिस्टेंस RS। तो VS सिग्नल इज 2 millivolt AC, 2 millivolt AC, and RS source resistance is 1 kilo ohm, and the CS signal input capacitor है, this is 10 microfarad। ठीक है, तो ये इनपुट के लिए हो गया। फिर R1 R2, ये जो दो कंपोनेंट्स हैं R1 R2 बेस के पहले, दिस इज यूज एज ए पोटेंशियल डिवाइडर। और इसका वैल्यू है R1 इज 40 किलो ओम एंड R2 इज 10 किलो ओम। ये R1 R2, इसके थ्रू पोटेंशियल डिवाइड होगा। देन देयर इज RECE, दिस इज RE is 2 kilo ohm and CE is 20 microfarad। मतलब ये RE है, this RE is 2 kilo ohm and this is 20 microfarad। तो ये पैसेज देगा फॉर फ्लो ऑफ द AC करंट। तो कम इमीटर एंड पे RE/RC है, दिस इज नोन एज सेल्फ बैस और सेल्फ बैस मीटर। और उसके ये कंपोनेंट्स हो गए। RC कैपेसिटर के ऊपर जो रेजिस्टेंस है RC, दिस इज 4 किलो ओम एंड द आउटपुट CC कपलिंग कैपेसिटर, दैट इज CC इज 1 माइक्रोफैराड। ये आपके कंपोनेंट्स दे दिए गए। और इसके बाद जो लोड लिया गया RL का मान, दिस इज 2.2 किलो ओम। ये ठीक है। तो अब इसका एक्शन क्या होगा? एक्शन में इफ वी टॉक अबाउट द एक्शन, तो इनपुट जो सिग्नल है, इनपुट सिग्नल बेस एंड से इंटर करेगा और ये एम्पलीफाई होगा, और एम्पलीफाई करके कलेक्टर एंड पर ये आउटपुट को पास किया जाएगा, आउटपुट पास किया जाएगा। बेस पॉइंट पर बेस वोल्टेज क्रिएट होगा which must be greater than 0.73 volt, 0.73 as well, and there is a self emitter bias। सेल्फ इमीटर बायस से क्या होगा कि AC कंपोनेंट और DC कंपोनेंट, AC passes through CE और DC passes through RE, तो इससे कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगा सेल्फ बायस से। एंड देन आउटपुट अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, आउटपुट अक्रॉस द लोड RL के क्रॉस आप लोड ले लेंगे, दैट इज फॉर आउटपुट।
ठीक है, ये एक्शन होगा। और कैसे ये एक्शन करता है, कैसे एम्प्लीफिकेशन का काम करता है, इस चीज को हम अच्छे तरीके से पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिए हैं कि हाउ द ट्रांजिस्टर वर्क एज एम्पलीफायर। अब इसके वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज की बात करें, दैट इज सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि टेस्ट कंडीशन क्या है। टेस्ट कंडीशन होता है बीटा आर ई must be greater than 10 times of R2. Beta RE must be 10 times greater than R2. ये मैंने सर्किट सही है कि नहीं है, जो कंपोनेंट्स लगे हैं वो ठीक लगे हैं कि नहीं, उसके लिए एक टेस्ट कंडीशन है। तो बीटा इज गिवन 100 and RE is given, it is 4 kilo ohm. RE is 4 kilo ohm or 2 kilo ohm. So this value is greater than 10 into R2. R2 is given as 10 kilo ohm. R2 is given 10 kilo ohm. So 100 into 2, this part is 200 kilo ohm, which is very, very greater than 10 into 10 is 100 kilo ohm. So the test condition is satisfied. What we have, this is satisfied. Okay. Test condition is satisfied. टेस्ट कंडीशन सेटिस्फाइड का मतलब हो गया कि जो गिवन सर्किट है दैट विल वर्क एज एम्पलीफायर, है ना। अब टेस्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, फर्स्ट पॉइंट है टेस्ट कंडीशन को चेक करना। सेकेंड पॉइंट है कि हम जानते हैं कि जो सर्किट बनता है वो JE इमीटर जंक्शन शुड बी इन फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर जंक्शन इज इन द रिवर्स बायस, ये होना चाहिए। तो JE शुड बी फॉरवर्ड बायस कैसे निकलेगा, इसके लिए हमें चाहिए बेस वोल्टेज। बेस वोल्टेज इज VB। तो VB क्या होगा, दिस इज IB बेस करेंट इंटू R2। बेस करेंट इंटू R2। बेस करेंट क्या होगा, VCC अपॉन R1 plus R2. This is the total resistance R1 plus R2 that is connected through the 20 volt AC, and this is the current, and then it is multiplied by R2. So VCC given है, VCC given है 20 volt, R2 given है, R2 is 10 kilo ohm, and this R1 is 40 kilo ohm and R2 is 10 kilo ohm. So these are the values given. और इसके हिसाब से यदि हम देखें तो this is 20 into 10 is 200 and this is 50. 40 plus 10 is 50. So this is cancelled volt. So VB is equal to 20 by 5 is 4 volt. VB is 4 volt. And this VB is 4 volt, which is greater than VBE, base emitter voltage. और base emitter voltage कितना होता है, it is 0.7 volt for silicon material. तो silicon material के लिए ये 0.7 volt होता है, ये standard value. So this confirmed that the emitter base junction is forward bias because 4 volt is greater than 0.7. Now the third point is emitter current. How much emitter current is flowing? So emitter current IE is equal to emitter voltage upon emitter resistance.
how much emitter voltage is? The base voltage minus base emitter voltage. बेस वोल्टेज में से बेस इमीटर वोल्टेज हटा दे तो दिस विल बी इमीटर वोल्टेज, दिस इज इमीटर वोल्टेज, और रेजिस्टेंस इज 2 किलो ओम, रेजिस्टेंस इज 2 किलो ओम. सो व्हाट इज दिस? बेस वोल्टेज अभी कैलकुलेट किया है 4 वोल्ट और बेस इमीटर वोल्टेज 0.7 वोल्ट and this is 2 kilo ohm. So this is 3.3 volt divided by 2 kilo ohm. So this is 1.65 milliampere. This is 1.65 milliampere. So this IE is equal to 1.65 milliampere. This is your emitter current that is flowing across the emitter. Now, the emitter resistance, inside, that is RE divided by VT upon IE. VT is noise voltage at room temperature. So if we suppose the noise voltage is 26 millivolt and this is 1.65 milliampere. So this value is, this milli cancel, 26 by 1.65 ohm. Then it is 15.76 ohm. So RE is equal to 15.76 ohm. What is this RC? The forward bias resistance. Sometimes it is called as forward bias resistance. So in case of forward bias resistance, we know resistance are very, very small, and the amplified resistance is beta RE. So beta is 100 multiply 15.76. So it is 1.5678 kilo ohm. This is the resistance amplified in the circuit. So these are the basics circuit components that we have discussed here through the circuit. Now on the basis of the amplifier action में जो सिग्नल है VS सिग्नल चेंज किया जाए, ठीक है, VS सिग्नल चेंज किया जाए few hertz to kilohertz, few hertz से kilohertz में चेंज किया जाए, तो जो हमारे पास स्टैंडर्ड कर्व मिलेगा, दिस कर्व इज समथिंग लाइक फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व. This curve is something like frequency response curve. So this is your frequency, and here it is gain, frequency and gain. So at this point, when there is a flat, so this flat is called as mid-range frequency, and this part is called lower range frequency, and this part is called higher range of the frequency. So the first point here for the analysis is voltage gain. Voltage gain in
mid-range frequency. Mid-range frequency. So this voltage gain AV is independent of frequency. So this is something like V output upon V input. And this V output upon V input is a dimensionless quantity. And this is nothing but it is the parallel combination of RC and RL. RC and RL. Parallel combination, and it is divided by RE. It is divided by RE. So the value is RC RL upon RE. This is RC plus RL. RC plus RL. So if we substitute this value, RC is 4 kilo ohm into RL is 2.2 kilo ohm divided by RE is 15.76 ohm into RC plus RL. So 4 kilo plus 2.62, that is 6.2 kilo ohm. So if we solve this, so it is minus 90. This is minus 90. So this AV, that is voltage gain is minus 90. Minus 90 means this value is 90. Mod value, if you take the mod, so this value is mod AV mid is 90 volt. Now the input impedance is given as the input impedance ZI is equal to RI is equal to parallel combination of R1, this is R2, that is beta RE. That is R1 is 40 kilo ohm, parallel combination of 10 kilo ohm, that is R2, and this beta RE is 1.58 kilo ohm. And this value, after the calculation, this value is 1.32 kilo ohm. 1.32 kilo ohm. And VI input is, this is Vs signal voltage divided by signal resistance plus input resistance Ri multiply by Ri resistance. This part is the current, and here it is multiplied with resistance. So this implies that is Vi upon Vs. Vi upon Vs is equal to Ri upon Rs plus Ri. Rs plus Ri. So this Ri is 1.32 kilo ohm upon 1.1 kilo ohm Rs plus 1.32 kilo ohm. So this value is 0.57 volt. So this value is 0.57 volt is Vi. So the signal gain AVS signal gain is output upon Vs
output upon Vs is V0 upon Vi and Vi by Vs. Vi upon Vs. So this value is minus 90 V output upon V input, and this V input upon Vs is 0.57. So this value is minus 51.21. This is 51.21. So this is AV of S is minus 51.21. Now the bandwidth and then mid-band gain. Mid-band gain is AV is equal to minus HFE into R dash upon HIE. So this value is minus 50 into 10 to the power minus 3. And here it is 1.1 into 10 to the power minus 3 into 1.545. So it is minus 29.43. Minus 29.43. Now lower frequency. Lower cutoff frequency for 3 dB gain. 3 dB gain. So lower cutoff frequency F1 is equal to 1 upon 2 pi CB ROC plus Rn. So this value is, that is 10 to the power 6 from the capacitor terminal, 2 into 3.14 into 8 into 1905 plus 1.1 kilo ohm. 1.1 kilo ohm. And after solving, this is 64 hertz. This is 64 hertz. So this one is F1, lower frequency gain. Now the upper frequency, upper cutoff frequency for 3 dB gain is F2. This F2 is 1 upon 2 pi C R dash BE. This R dash BE base meter is HFE upon GM. And this value is given, it is 50 upon 50 into 10 to the power minus 3. So this value is 10 to the power 3. So substituting this value again, 1 upon 2 into 3.14 into the C capacitor. Capacitor is 10 to the power minus 12 picofarad into 10 to the power 3 into 2 into 10 to the power 9. So this value is 80 kilohertz. This value F2 is 80 kilohertz. So what we find from this analysis, we find that
overall part is this value is 29.43 and the corresponding cutoff has the frequency lower cutoff and higher cutoff FL. This is 6.4 hertz and this F of higher cutoff is 80 kilohertz. So the bandwidth delta F is equal to F of H minus F of L, that is 80 kilohertz minus 6.4 hertz. 80 kilohertz minus this one. So this is equal to 799 and this 3.6. Again 9. Yes, this is bandwidth, and this bandwidth is again approximately 80 kilohertz. This is 80 kilohertz. So this is analysis of AF amplifier or dual frequency amplifier. The analysis of a dual frequency amplifier.